Hello friends, this is Sonali Rathi and I welcome you all in the world of physics. So as I already said, we'll discuss the fresh chapter, that is magnetic material. So let's start the chapter. So basically in this chapter, so many contents are there, like all the basic properties regarding magnet and magnetism, then what are the magnetic materials, types of magnetic materials, applications of magnetic materials like the construction of electromagnet and so on. But before that, we have already done the chapter magnetism in the 11th standard. So first of all, we'll discuss everything, every basic concept regarding bar magnet and magnetism, and then we'll discuss the magnetic materials. So the very first important property of a bar magnet is magnetism. So we should know what is mean by magnetism. Now just suppose this is a bar magnet. Now this bar magnet will create some magnetic field around it, right? Now if I place any kind of magnetic material in its surrounding, then what will happen? एक तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर वो मैग्नेट से दूर रिपेल होगा. वो अट्रैक्ट हो रहा है मीन्स ऑब्वियसली अ सर्टन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर. रिपेल हो रहा है मीन्स सर्टन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर. So this force of attraction, this force of repulsion is one of the important property shown by a bar magnet, and that is nothing but called as a magnetism. So इसी concept को अगर हम simple words में define करें, so we can define the magnetism as it is the property exhibited by a bar magnet by the virtue of which it may either attracts or repels the magnetic materials which are placed in its surrounding. अब ये मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं बार मैग्नेट, इट शोज द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अपार्ट फ्रॉम दिस. व्हाट आर दोज प्रॉपर्टी? यू नो दैट एवरी बार मैग्नेट हैज अ टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड वी नो दैट if we suspend this bar magnet in external magnetic field, then what happens? It get deflects and it align itself along a north-south direction. So this is called as a directive property of a bar magnet. At the same time, you know that two like poles of a bar magnet always repel each other. This is called as a repulsive property. Two unlike poles of a bar magnet always attracts each other. This is called as a attractive property. Now this bar magnet is also called as a magnetic dipole. Now question arises, why it is called as a magnetic dipole? Simple activity है. Suppose we'll consider this as a bar magnet. Now if I cut this bar magnet into number of equal parts and just take a tiny piece of this, no matter how tiny your bar magnet is, again it exhibits two poles, that is north pole and south pole. Means कोई भी बार मैग्नेट को आप कितना भी कट कीजिए, उसका छोटा से छोटा पोर्शन आप लीजिए, वो भी मैग्नेट की तरह, एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिससे फिर से दो पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल. इट मीन्स यू कैनॉट सेपरेट द टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, and that's why magnetic monopole doesn't exist. This is most important property of a magnet. Magnet always exists in form of two poles, and as it exists in form of two poles, we call it as a dipole, where di means two. So it's very simple. The definition is two poles of a bar magnet which are separated by a particular finite distance is called as a magnetic dipole. So now we'll discuss the terms associated with a magnetic dipole. So suppose this is our magnetic dipole. This is our magnetic dipole which has a two poles, that is, suppose this is south pole and suppose this is north pole. Now there are some basic terms related to the bar magnet or a magnetic dipole. Now let's see. This is the line which is passing through the center of this bar magnet. So this line is called as a axis. So simple definition है, a straight line which is passing through the two poles of a bar magnet is called as a magnetic axis. The next term is this. This is called as a magnetic equator. अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? This is also a straight line which is passing through the center but perpendicular to this magnetic
axis is called as a magnetic equator. Now the next concept is the distance of every pole from the center of bar magnet is given by L. So total distance between two poles of a bar magnet कितना हो जाएगा? This will becomes 2L. And this 2L distance between the two poles of a bar magnet is called as a magnetic length. The next important term regarding bar magnet is, you just keep in mind that these two poles of a bar magnet are not situated exactly at the extreme ends of a bar magnet. These are situated somewhere here, and distance between these two poles, we call it as a magnetic length. There is one more length that is called as a geometric length. So what is magnetic length and what is geometric length? As I told you, these two poles of a bar magnet are not situated exactly at the extreme ends. These are situated somewhere here. So distance between two poles is called, this is called magnetic length. Then what is geometric length? So this distance between two extreme ends of a bar magnet, this is called as a geometric length. So this is geometric length, and there is a relation between magnetic length and geometric length. So magnetic length, this ml stands for the magnetic length, equals to 5/6 times of geometric length. डायग्राम पे से क्लियर है? ऑब्वियसली जियोमेट्रिक लेंथ ये मैग्नेटिक लेंथ से ज़्यादा रहेगी, सो मैग्नेटिक लेंथ इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग बार मैग्नेट इज पोल स्ट्रेंथ. इसके नाम में ही इसका मीनिंग हिडन है. पोल स्ट्रेंथ मीन्स क्या होगा? पोल की स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड एज अ पोल स्ट्रेंथ. सो यू नो दैट बार मैग्नेट exhibit the property of magnetism. It has a magnetic strength, and the magnetic strength of a bar magnet is maximum at the two poles. So the strength of a bar magnet which is concentrated at the two poles of a bar magnet is called as a pole strength. अब जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, जिसमें एक चार्ज हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, दूसरा चार्ज हम निगेटिव कंसिडर करते हैं. वैसे ही यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है जिसमें भी टू पोल्स हैं. सो ऑब्वियसली एक की पोल स्ट्रेंथ हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और दूसरे की नेगेटिव. सो जनरली ये नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाती है और साउथ पोल की नेगेटिव. एंड द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग पोल स्ट्रेंथ इज Q and the suffix M. So this QM for the north pole and this minus QM for the south pole. So this is pole strength. So these are some of the basic terms associated with the bar magnet. Again I repeat, magnetic axis, magnetic equator, two poles, north pole and south pole. This is magnetic length between this is the distance between two poles. This is the geometric length, which is the distance between two extreme ends. This is the relation between magnetic length and geometric length. And this is pole strength, at which the entire strength of a magnet is concentrated at these two poles. This pole strength is always positive for north pole, it is negative for south pole. So this is all important. Now the next term which is very important regarding bar magnet is, and this term you have to use this term in your entire chapter. So this is quite important. You can mark it as a important, and that term is magnetic moment, which is one of the most important property of a bar magnet or magnetic dipole. This magnetic moment is denoted by small m, an arrow on its head, which clearly indicates that this magnetic moment is a vector quantity. अब ये मैग्नेटिक मोमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस है. तो पहली डेफिनेशन हम जो कंसिडर करेंगे वो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए. सो द फर्स्ट डेफिनेशन विल डिस्कस हियर फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल.
व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक मोमेंट. द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, एक सिंपल डेफिनेशन जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and magnetic length. Now you better know what is pole strength and you better know what is magnetic length. So formula point of view, definition, this is the definition. So formula क्या होगा, magnetic moment symbol is M equals to product of pole strength. Now pole strength is Qm and magnetic length is Y cell. So this is, if you are writing it in a vector form, then m bar equals to Qm into twice L bar. So this is one of the most important formula of a magnetic moment. Now second definition of magnetic moment, this is formula point of view definition. अब जो डिफाइन हम करेंगे वो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन है, एंड दिस डेफिनेशन ऑल्सो लाइज फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल. अब मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है. सपोज मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया, विल कंसिडर दिस एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मैंने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा. अब नाउ आई यूज द वर्ड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेडियल अलग अलग टाइप्स की होती है. बट इफ आई एम यूजिंग अ वर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस. सो सपोज आई कंसिडर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, which I have shown by equidistant parallel line, and you know this is the symbol of uniform magnetic field, and arrow indicates that magnetic field is a vector quantity. This is my magnetic dipole. So initially suppose my magnetic dipole is in this condition. Okay, so what happens, as soon as I place this magnetic dipole in uniform magnetic field, then what happens, ये uniform magnetic field ये magnetic dipole पे टॉर्क अप्लाई करती है, बिकॉज ये magnetic dipole को दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So two forces get acts at the two poles of this bar magnet, which are equal in magnitude and opposite in direction. And now you better know two equal and opposite forces contributes a torque. और कोई चीज़ पे, कोई रिजिड बॉडी पे अगर टॉर्क अप्लाई होता है, देन दैट बॉडी स्टार्ट्स टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन, और यू कैन से अ डिफ्लेक्शन. सो इनिशियली द मैग्नेट वाज लाइक दिस, बट एज सून एज आई प्लेस दिस मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड exerts equal and opposite force at two poles of this bar magnet, which contributes a torque. And what happens, this torque tends to deflect this magnet like this. So the new position of magnet is like this, and this is the axis, this is center point O. Suppose this is south pole, suppose this is north pole. Okay, so one force is acting like this and another force is acting like this. Suppose this is F1 bar, this is F2 bar, and this was the initial position. Now this is new position. So ये इतने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ, that's why we call theta as the angle of deflection. So now in short, what is happening here? When you placed a magnetic dipole in external uniform magnetic field, that uniform magnetic field exerts a torque on this magnet. That torque tends to rotate the magnet, and this is the angle of rotation, or we can say angle of deflection, theta. मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो ऐसे ओरिजिनल पोजीशन में ना रहते हुए कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, रोटेट होता है, उस पर क्या एक्ट होता है, टॉर्क एक्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट. अब ये कॉन्सेप्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे
तो हमारी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। बट टॉर्क कब एक्ट हो रहा है? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, कहाँ प्लेस किया आपने उसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So this is concept point of view definition of magnetic moment. This is formula point of view definition of magnetic moment, and both these definitions are applicable for the magnetic dipole. So now इसमें से formula हो जाएगा torque acting on a magnet. Torque का symbol है this, which is a vector quantity equals to m bar cross of b bar. ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अवेलेबल है बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, सो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये एम बार जो है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है वो हमेशा ध्यान में रखिए, अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन रहेगी। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी डाइपोल इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एम बार, this is direction of m bar, this is direction of b bar, and this theta is angle between these two vectors m bar and b bar. ये फिगर हम सेपरेटली अगर इधर ड्रॉ करें, so this is your b bar which is uniform magnetic field, this is your m bar which is magnetic moment, and this theta is the angle between these two vectors. Now this is in a vector notation. If you are writing it in a scalar form, सो स्केलर फॉर्म में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल्स टू एम बी, क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इट विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? क्लियर इंडिकेट्स दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स एम बार एंड बी बार। सो वेयर थीटा इज एंगल between vectors m bar and b bar. So this is very important concept. So next definition जो है magnetic moment की वो हम देखेंगे current carrying coil के लिए। Now you know that suppose now we don't have a bar magnet or a magnetic dipole. Suppose this is a current carrying coil. Okay, and suppose a current is flowing through a coil. So let I be a current flowing through a coil. Now according to the concept of magnetic effect of electric current which has been invented by a scientist Oersted, आपको पता है कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, so what happens that current carrying conductor also creates a magnetic field around it. So see, a bar magnet creates a magnetic field around it. This current carrying conductor also creates a magnetic field around it. So we can compare this bar magnet with this current carrying coil. So we call this bar magnet as a magnetic dipole because वो magnetic field create करता है। अब ये current carrying coil भी अगर अपने around magnetic field create कर रही है, so we can call this current carrying coil as a magnetic dipole. We can compare this with a magnetic dipole. और अगर अब ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह अगर एक्ट करती है तो मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। सो स्पेशली जो हमने दो डेफिनेशन प्रीवियसली देखी मैग्नेटिक मोमेंट की वो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए थी। अब जो थर्ड डेफिनेशन हम मैग्नेटिक मोमेंट की देखेंगे वो करंट कैरिंग कॉइल की है which also creates a magnetic field which also acts as a magnetic dipole. So definition is quite simple. Again I repeat, this definition is applicable only for the current carrying conductor. So definition is magnetic moment is defined as product of current flowing through coil
एरिया ऑफ कॉइल। अब ये सिंपल डेफिनेशन है। अब ये सिंपल डेफिनेशन को अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट, this is the current I flowing through a coil, and area of the coil. So suppose capital A be the area of the coil, where A is area of coil. So this is one more important formula of magnetic moment. We have taken a coil having a single turn, but not necessarily. Suppose the coil has n number of turns. So for coil having n number of turns, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली ये फॉर्मूले को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो m विल बी इक्वल्स टू n I a. So this is 3 and this is 4. So equations 1, 2, 3 and 4 are the different forms of magnetic moment, and this is also very important concept that you have to use in your next point. Okay, so keep this in mind. Now talking about the SI unit. SI unit लर्न नहीं करना है, SI यूनिट हमें फॉर्मूला पे से डिराइव करना है, और फॉर्मूला भी हमें लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला हमें डेफिनेशन से तैयार करना है. सो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पे से हमने फॉर्मूला बनाया. अब इस फॉर्मूला पे से हम SI यूनिट लिखेंगे. सो सी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया. यू नो दैट द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर and SI unit of area is meter square. So this is the simple SI unit of a magnetic moment which is applicable for all the definitions. So this is very important. Again I repeat, this is very important concept जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स में हमेशा आएगा. कभी करंट कैरिंग कॉइल के लिए आएगा, कभी बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए आएगा. तो ये अच्छे से कीजिए. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll meet with the next point. So until then, stay studious, stay curious. Thank you.